मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। यह सम्मान केवल मेरा सम्मान नहीं है, यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। यह भारत और रूस की सदियों पुरानी गहरी मित्रता और आपसी विश्वास का सम्मान है। यह हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का सम्मान है। एक्सेलेंसी, पिछले लगभग 2.5 दशक से आपके नेतृत्व में भारत और रूस के संबंध हर दिशा में मजबूत हुए हैं और हर बार नई ऊंचाइयों को प्राप्त करते रहे हैं। आपने दोनों देशों के बीच जिन स्ट्रेटेजिक संबंधों की नींव रखी थी, वो गुजरते समय के साथ और मजबूत होकर निखरी है। पीपल टू पीपल पार्टनरशिप पर आधारित हमारा पारस्परिक सहयोग हमारे लोगों के बेहतर भविष्य की उम्मीद भी बन रहा है, गारंटी भी बन रहा है। आज की चर्चाओं में भी हमने सभी क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए नए और महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। हमारे संबंध केवल दोनों देशों के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज के वैश्विक वातावरण के परिप्रेक्ष्य में भारत और रूस की पार्टनरशिप और भी अहम हो जाती है। हम दोनों विश्वास रखते हैं कि वैश्विक स्थिरता और शांति के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। आने वाले समय में हम मिलकर इसी दिशा में काम करते रहेंगे। एक्सेलेंसी, एक बार फिर इस सम्मान के लिए मैं 140 करोड़ भारतवासियों की ओर से आपका, रूसी सरकार का और रूस के लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। स्पासिबा। Согласно статуту, им награждаются видные российские государственные, общественные деятели и лидеры зарубежных стран за выдающиеся заслуги. According to its statute, this order is conferred upon prominent Russian statesmen and public figures as well as the leaders of foreign nations for their outstanding service. It gives me particularly pleasure to present this honorary award here at the Kremlin in the stately setting that befits the order and its statute. Эту почетную награду именно здесь, в Кремле, в подобающей статуту ордена торжественной обстановки. Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, награждение вас орденом святого апостола Андрея Первозванного отражает искреннюю признательность российской стороны за тот значимый вклад, который вы вносите в укрепление дружбы и взаимопонимания между нашими государствами и народами. Вы всегда активно выступали за расширение контактов с нашей страной. И еще, будучи главным министром штата Гуджарат, выдвинули инициативу установления побратимских связей с российскими регионами, в данном случае с Астраханской областью.
Находясь уже 10 лет во главе правительства, вы реально способствовали тому, чтобы российско-индийские отношения приобрели характер особо привилегированного стратегического партнерства. При вашей непосредственной поддержке успешно реализуются крупнейшие российско-индийские проекты в торгово-экономической и военно-технической сферах, в атомной и углеводородной энергетике, в области высоких технологий и космоса. Трудно переоценить ваш вклад в формирование устойчивой основы российско-индийского сотрудничества на международной арене, где обе наши страны отстаивают принципы многополярности и строгого соблюдения международного права. Совместно работают в интересах обеспечения стабильности, глобальной и региональной безопасности. Тесно взаимодействуют в рамках БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества. Уважаемый господин. Success and all the best. And to the friendly people of India, I wish peace and prosperity. Thank you. Указом президента Российской Федерации за выдающиеся заслуги в развитии особо привилегированного стратегического партнерства между Российской Федерацией и Республикой Индии и дружественных связей между российским и индийским народами орденом Святого Апостола Андрея Первозванного награждается Нарендра Дамодардас Моди, премьер-министр Республики Индии. By the decree of the President of the Russian Federation for the outstanding contribution to the development of the special and privileged strategic partnership between the Republic of India and the Russian Federation and the friendly ties between the people of India and Russia, the Order of St. Andrew the Apostle, the first called, is being awarded to His Excellency Narendra Damodar Das Modi, the Honorable Prime Minister of the Republic of India. योर एक्सेलेंसी और मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन, रूस के सर्वोच्च अवार्ड से सम्मानित करने के लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। यह सम्मान केवल मेरा सम्मान नहीं है, यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। यह भारत और रूस की सदियों पुरानी गहरी मित्रता और आपसी विश्वास का सम्मान है। यह हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का सम्मान है। एक्सेलेंसी, पिछले लगभग 2.5 दशक से आपके नेतृत्व में भारत और रूस के संबंध हर दिशा में मजबूत हुए हैं और हर बार नई ऊंचाइयों को प्राप्त करते रहे हैं। आपने दोनों देशों के बीच जिन स्ट्रेटेजिक संबंधों की नींव रखी थी, वो गुजरते समय के साथ और मजबूत होकर निखरी है। पीपल टू पीपल पार्टनरशिप पर आधारित हमारा पारस्परिक सहयोग हमारे लोगों के बेहतर भविष्य की उम्मीद भी बन रहा है, गारंटी भी बन रहा है। आज की चर्चाओं में भी हमने सभी क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए
नए और महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। हमारे संबंध केवल दोनों देशों के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज के वैश्विक वातावरण के परिप्रेक्ष्य में भारत और रूस की पार्टनरशिप और भी अहम हो जाती है। हम दोनों विश्वास रखते हैं कि वैश्विक स्थिरता और शांति के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। आने वाले समय में हम मिलकर इसी दिशा में काम करते रहेंगे। एक्सेलेंसी, एक बार फिर इस सम्मान के लिए मैं 140 करोड़ भारतवासियों की ओर से आपका, रूसी सरकार का और रूस के लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। स्पासिबा। Peter the Great. Согласно статуту, According to its statute, награждаются this видные order is российские conferred государственные, upon общественные prominent Russian деятели и statesmen лидеры and public зарубежных figures, as стран well as the leaders за of foreign nations, выдающиеся for заслуги. their. According to its statute, this order is conferred upon prominent Russian statesmen and public figures, as well as the leaders of foreign nations, for their outstanding service. It gives me particularly pleasure to present this honorary award here at the Kremlin in the stately setting that befits the order and its statute. Эту почетную награду именно здесь, в Кремле, в подобающей статуту ордена торжественной обстановке. Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, награждение вас орденом святого апостола Андрея Первозванного отражает искреннюю признательность российской стороны за тот значимый вклад, который вы вносите в укрепление дружбы и взаимопонимания между нашими государствами и народами. Вы всегда активно выступали за расширение контактов с нашей страной. И еще, будучи главным министром штата Гуджарат, выдвинули инициативу установления побратимских связей с российскими регионами, в данном случае с Астраханской областью. Находясь уже 10 лет во главе правительства Индии, вы реально способствовали тому, чтобы российско-индийские отношения приобрели характер особо привилегированного стратегического партнерства. При вашей непосредственной поддержке успешно реализуются крупнейшие российско-индийские проекты в торгово-экономической и военно-технической сферах, в атомной и углеводородной энергетике, в области высоких технологий и космоса. Трудно переоценить ваш вклад в формирование устойчивой основы российско-индийского сотрудничества на международной арене, где обе наши страны отстаивают принципы многополярности и строгого соблюдения международного права. Совместно работают в интересах обеспечения стабильности, глобальной и региональной безопасности. Тесно взаимодействуют в рамках БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества. Уважаемый господин. Success and all the best. And to the friendly people of India, I wish peace and prosperity. Thank you. Указом президента Российской Федерации за выдающиеся заслуги в развитии особо привилегированного стратегического партнерства между Российской Федерацией и Республикой Индии и дружественных связей между российским и индийским народами орденом святого апостола Андрея Первозванного награждается Нарендра Дамодардас Моди, премьер-министр Республики Индии. By the decree of the President of the Russian Federation for the outstanding contribution to the development of the special and privileged strategic partnership between the Republic of India and the Russian Federation and the friendly ties between the people of India and Russia, the Order of St. Andrew the Apostle, the first called, is being awarded to
His Excellency Narendra Damodar Das Modi, the Honorable Prime Minister of the Republic of India. योर एक्सेलेंसी और मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन, रूस के सर्वोच्च अवार्ड से सम्मानित करने के लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। यह सम्मान केवल मेरा सम्मान नहीं है, यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। यह भारत और रूस की सदियों पुरानी गहरी मित्रता और आपसी विश्वास का सम्मान है। यह हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का सम्मान है। एक्सेलेंसी, पिछले लगभग 2.5 दशक से आपके नेतृत्व में भारत और रूस के संबंध हर दिशा में मजबूत हुए हैं और हर बार नई ऊंचाइयों को प्राप्त करते रहे हैं। आपने दोनों देशों के बीच जिन स्ट्रेटेजिक संबंधों की नींव रखी थी, वो गुजरते समय के साथ और मजबूत होकर निखरी है। पीपल टू पीपल पार्टनरशिप पर आधारित हमारा पारस्परिक सहयोग हमारे लोगों के बेहतर भविष्य की उम्मीद भी बन रहा है, गारंटी भी बन रहा है। आज की चर्चाओं में भी हमने सभी क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए नए और महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। हमारे संबंध केवल दोनों देशों के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज के वैश्विक वातावरण के परिप्रेक्ष्य में भारत और रूस की पार्टनरशिप और भी अहम हो जाती है। हम दोनों विश्वास रखते हैं कि वैश्विक स्थिरता और शांति के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। आने वाले समय में हम मिलकर इसी दिशा में काम करते रहेंगे। एक्सेलेंसी, एक बार फिर इस सम्मान के लिए मैं 140 करोड़ भारतवासियों की ओर से आपका, रूसी सरकार का और रूस के लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। स्पासिबा। Peter the Great. Согласно статуту, According to its statute, награждаются this видные order is российские conferred государственные, upon общественные prominent Russian деятели и statesmen лидеры and public зарубежных figures, as стран well as the leaders за of foreign nations выдающиеся for заслуги. their. According to its statute, this order is conferred upon prominent Russian statesmen and public figures, as well as the leaders of foreign nations for their outstanding service. It gives me particularly pleasure to present this honorary award here at the Kremlin in the stately
setting that befits the order and its statute. Эту почетную награду именно здесь, в Кремле, в подобающей статуту ордена торжественной обстановке. Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, награждение вас орденом святого апостола Андрея Первозванного отражает искреннюю признательность российской стороны за тот значимый вклад, который вы вносите в укрепление дружбы и взаимопонимания между нашими государствами и народами. Вы всегда активно выступали за расширение контактов с нашей страной. И еще, будучи главным министром штата Гуджарат, выдвинули инициативу установления побратимских связей с российскими регионами, в данном случае с Астраханской областью. Находясь уже 10 лет во главе правительства, вы реально способствовали тому, чтобы российско-индийские отношения приобрели характер особо привилегированного стратегического партнерства. При вашей непосредственной поддержке успешно реализуются крупнейшие российско-индийские проекты в торгово-экономической и военно-технической сферах, в атомной и углеводородной энергетике, в области высоких технологий и космоса. Трудно переоценить ваш вклад в формирование устойчивой основы российско-индийского сотрудничества на международной арене, где обе наши страны отстаивают принципы многополярности и строгого соблюдения международного права. Совместно работают в интересах обеспечения стабильности, глобальной и региональной безопасности. Тесно взаимодействуют в рамках БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества. Уважаемый господин. Success and all the best. And to the friendly people of India, I wish peace and prosperity. Thank you. Указом президента Российской Федерации за выдающиеся заслуги в развитии особо привилегированного стратегического партнерства между Российской Федерацией и Республикой Индии и дружественных связей между российским и индийским народами орденом святого апостола Андрея Первозванного награждается Нарендра Дамодардас Моди, премьер-министр Республики Индии. By the decree of the President of the Russian Federation for the outstanding contribution to the development of the special and privileged strategic partnership between the Republic of India and the Russian Federation and the friendly ties between the people of India and Russia, the Order of St. Andrew the Apostle, the first called, is being awarded to His Excellency Narendra Damodar Das Modi, the Honorable Prime Minister of the Republic of India. योर एक्सेलेंसी और मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन, रूस के सर्वोच्च अवार्ड से सम्मानित करने के लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। यह सम्मान केवल मेरा सम्मान नहीं है, यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। यह भारत और रूस की सदियों पुरानी गहरी मित्रता और आपसी विश्वास का सम्मान है। यह हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का सम्मान है। एक्सेलेंसी, पिछले लगभग 2.5 दशक से आपके नेतृत्व में भारत और रूस के संबंध हर दिशा में मजबूत हुए हैं और हर बार नई ऊंचाइयों को
प्राप्त करते रहे हैं। आपने दोनों देशों के बीच जिन स्ट्रेटेजिक संबंधों की नींव रखी थी, वो गुजरते समय के साथ और मजबूत होकर निखरी है। पीपल टू पीपल पार्टनरशिप पर आधारित हमारा पारस्परिक सहयोग हमारे लोगों के बेहतर भविष्य की उम्मीद भी बन रहा है, गारंटी भी बन रहा है। आज की चर्चाओं में भी हमने सभी क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए नए और महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। हमारे संबंध केवल दोनों देशों के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज के वैश्विक वातावरण के परिप्रेक्ष्य में भारत और रूस की पार्टनरशिप और भी अहम हो जाती है। हम दोनों विश्वास रखते हैं कि वैश्विक स्थिरता और शांति के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। आने वाले समय में हम मिलकर इसी दिशा में काम करते रहेंगे। एक्सेलेंसी, एक बार फिर इस सम्मान के लिए मैं 140 करोड़ भारतवासियों की ओर से आपका, रूसी सरकार का और रूस के लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। स्पासिबा। Peter the Great. Согласно статуту, According to its statute, награждаются this видные order is российские conferred государственные, upon общественные prominent Russian деятели и statesmen лидеры and public зарубежных figures, as стран well as the leaders за of foreign nations, выдающиеся for заслуги. their. According to its statute, this order is conferred upon prominent Russian statesmen and public figures, as well as the leaders of foreign nations, for their outstanding service. It gives me particularly pleasure to present this honorary award here at the Kremlin in the stately setting that befits the order and its statute. Эту почетную награду именно здесь, в Кремле, в подобающей статуту ордена торжественной обстановке. Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, награждение вас орденом святого апостола Андрея Первозванного отражает искреннюю признательность российской стороны за тот значимый вклад, который вы вносите в укрепление дружбы и взаимопонимания между нашими государствами и народами. Вы всегда активно выступали за расширение контактов с нашей страной. И еще, будучи главным министром штата Гуджарат, выдвинули инициативу установления побратимских связей с российскими регионами, в данном случае с Астраханской областью. Находясь уже 10 лет во главе правительства, вы реально способствовали тому, чтобы российско-индийские отношения приобрели характер особо привилегированного стратегического партнерства. При вашей непосредственной поддержке успешно реализуются крупнейшие российско-индийские проекты в торгово-экономической и военно-технической сферах, в атомной и углеводородной энергетике, в области высоких технологий и космоса. Трудно переоценить ваш вклад в формирование устойчивой основы российско-индийского сотрудничества на международной арене, где обе наши страны отстаивают принципы многополярности и строгого соблюдения международного права. Совместно работают в интересах обеспечения стабильности, глобальной и региональной безопасности. Тесно взаимодействуют в рамках БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества. Уважаемый господин. Success and all the best. And to the friendly people of India, I wish peace and prosperity. Thank you.
Указом президента Российской Федерации за выдающиеся заслуги в развитии особо привилегированного стратегического партнерства между Российской Федерацией и Республикой Индии и дружественных связей между российским и индийским народами орденом Святого Апостола Андрея Первозванного награждается Нарендра Дамодардас Моди, премьер-министр Республики Индии. By the decree of the President of the Russian Federation for the outstanding contribution to the development of the special and privileged strategic partnership between the Republic of India and the Russian Federation and the friendly ties between the people of India and Russia, the Order of St. Andrew the Apostle, the first called, is being awarded to His Excellency Narendra Damodar Das Modi, the Honorable Prime Minister of the Republic of India. योर एक्सेलेंसी और मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन, रूस के सर्वोच्च अवार्ड से सम्मानित करने के लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। यह सम्मान केवल मेरा सम्मान नहीं है, यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। यह भारत और रूस की सदियों पुरानी गहरी मित्रता और आपसी विश्वास का सम्मान है। यह हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का सम्मान है। एक्सेलेंसी, पिछले लगभग 2.5 दशक से आपके नेतृत्व में भारत और रूस के संबंध हर दिशा में मजबूत हुए हैं और हर बार नई ऊंचाइयों को प्राप्त करते रहे हैं। आपने दोनों देशों के बीच जिन स्ट्रेटेजिक संबंधों की नींव रखी थी, वो गुजरते समय के साथ और मजबूत होकर निखरी है। पीपल टू पीपल पार्टनरशिप पर आधारित हमारा पारस्परिक सहयोग हमारे लोगों के बेहतर भविष्य की उम्मीद भी बन रहा है, गारंटी भी बन रहा है। आज की चर्चाओं में भी हमने सभी क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए नए और महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। हमारे संबंध केवल दोनों देशों के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज के वैश्विक वातावरण के परिप्रेक्ष्य में भारत और रूस की पार्टनरशिप और भी अहम हो जाती है। हम दोनों विश्वास रखते हैं कि वैश्विक स्थिरता और शांति के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। आने वाले समय में